think we can start one by one, alphabetically. So whatever doubts you guys might have, I think they will be very common doubts and shared doubts. So we'll get them out of the way. That will be like a FAQ section. So that once we are over with that, then I'll share my thoughts beginning to end, whether it is on body language, DAF, service preference, hobbies, filling of the DAF, how to go about the interview. What if your interview comes too soon? What if you have too much time on your hands? Then how things might change a little bit, how to make use of transcripts and all of those things. So I have a fair you know idea about what I'm going to say, but still let's take your questions first. So I think Antik can start, right? Hi, sir. I do not have any specific questions as of yet. One thing would be that this would be my second interview, Okay. and last time I got around 173. Okay. Although I felt the interview went good. Right. Yeah. So one thing I had faced continuously is about answering. Like, there's one school of thought which says that you should take a middle path, Yeah. and then there's another school of thought which says that you should choose one. Yeah. Yeah. So how to go about it? Okay. Then- So Also, I you could think this would be also about improving your score, like what sets 170 apart from maybe definitely. 190s or 200s. Yeah. Okay. Also, if you could suggest a efficient way or a way forward on how can we like complete the topics Right. apart from current affairs, Okay. like apart from current affairs and DAF, other things, contemporary affairs. Absolutely. Okay. I think next in line would be Akshat. Mm, okay, Akshat does not have any question. Aman, maybe if you have any question at the top of your mind, you can share. Sir, I joined late, so my question is that this is my first interview, so most how to I start. cannot hear you. Where to start? Can you speak a little louder? So, am I audible now, sir? Yeah. So actually, I joined late, so I might have missed your earlier questions, but sir, this is my first interview. So my first question is like it is very confusing regarding how to start and especially what mistakes to avoid. So that is All the right. first point. Okay, Yes, thank mistakes to avoid, and if you're giving it for the first time. Okay, great. Next we have Gargi. Do you have any question? Which one? No, sir, no specific question. Okay, no problem. Mananji, do you have any specific question like top three which might be bothering you, which might be the most troublesome part for you for the interview? Hello, sir. Hello. Sir, this is my first interview, and like I am bothered about like I have not have such a strong background, Okay. and how much it would affect, and what are the things that could lead like scoring below 160. Okay. So mistakes to avoid basically. What do you mean when Yeah, you say you don't have a strong background? background means I am like done my engineering from very private college, and also like academically I'm not very You're good. academically, though you should. I mean, you are at the interview stage of the toughest exam of the country, so to say. So please, Khair, I'll talk about this mindset thing more in the session. But Okay, yeah, okay. I get the picture. But I'm telling you, this is not something you should worry about. Next, we Okay. have Thank you. Namita. Um, Sir, this is my first interview. So the question is like, what is the first step that we should do after this? Like, should we like study or work on DAF or use the transcripts? Because I or we don't know like what to do. This is the first experience. इसकी कुछ ज़्यादा बात भी नहीं होती है. So what has to be done the very first? Okay, okay. ठीक है. Like basic beginning steps that we Yes, should yes, start with. Right. yes. Pratik. Pratik Joshi.
Yeah, Pratik, if you have any question, so we are getting FAQs out of the way so that we can cover most ground about what might be the most troublesome areas for everyone. So if you have any question, you can ask. Like, नहीं सर वो जनरली पूछना था मेरा. okay, okay, ठीक है. Rahul. Sir, I have given CAPFAC interview last year. Okay. So, is there any drastic difference between the CSC and CAPFAC interview? Okay. Then we have Sadhya. सर आई वुड से नंबर वन तो हॉबीज और अचीवमेंट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है. उसके अलावा सर आई हैव मेनी प्लेसेस इन from I think important places to my life basically. My 10th and 12th is from a different place. Okay. Graduation and Right. studying in a different place and belong to a different place. So, I mean, I can guess you must be confused, like what to prioritize. Do I have to study about all the places, or do I have to focus on weekends? What about the hobbies and achievements specifically? Are you worried about? Sir, I feel that I don't have any. It feels like मतलब जैसे हर हॉबी पे people try to tell you that बहुत ही deep questions आ जाएंगे and I think फिर डर लग जाता है, फिर you're discouraged from feeling that. Achievements also I feel like I don't have any. No problem. ठीक है. We have SDD. Your username shows SDD. So if you have any questions. People who join towards the end, we are just taking questions and we'll start in the next 1 or 2 minutes. So if you have any question literally about the interview that is making you more confused, so please feel free to ask. I see new joinees as Meet and Gargi as well. No, I think Gargi has done. Okay. Yeah, please go on. Yes, sir, I had a couple of questions. एक तो say if we had written something in DAF2 जब तब लिख रहे थे DAF hobbies में जो तब कर रहे थे, अब तो 7-8 महीने हो गए. It's a long lost hobby. तो मतलब अब पता नहीं है कि कब इंटरव्यू डेट आएगी. So about addressing that कि वो दोबारा लिखनी चाहिए. Like I used to read non-fiction books तब, but अब 8 महीने से there's nothing in that. So I'm not sure कि अब इसको मुझे rekindle करना चाहिए, दोबारा से मैं उस पर टाइम स्पेंड करूं. The opportunity cost वो नहीं समझ आ रहा मुझे. Secondly, कई लोगों ने बोला है कि since it's your first interview तो दिल्ली जाने का utility है 1-to-1 sessions के लिए offline. So that is an issue, and there are a number of interview prep courses floating around. So I'm not sure about whether quantity matters at this point or quality. Yeah. Okay, great. ठीक है, कोर्सेज को लेके हो जाएगा और ये वाला चीज़ है डन. Okay, now by the way, at any point of time you feel that you want me to address something again, or you want me to emphasize about or take a deep dive on one particular thing that I state, so please don't hesitate to open up your mics and ask me questions in between. So it is more of a discussion based session. Yeah, Antik, please go on. One thing I had to add, that an issue with me and probably many of us would be that post mains or post prelims, many have discontinued with newspapers, regular reading of newspapers. Yeah. So there have been a lot happening over the last year. Yeah. So how can we cover it up properly? ठीक है ना. Also, sir, I also had one. I wanted to add, like for the hobbies. So, for example, I started a new hobby, not decisively that I have to do, but I just wanted to. Let's say drawing. Yeah. So, can we add that? And it's been like hardly 2 or 3 days, like 2 or 3 times that I've started that. So, should I include that or should I not? Regarding the hobbies, broadly speaking. Right. Then. Okay. So I'll firstly talk about the mindset of the interview, because I think
ये एक चीज़ है जो बहुत ओवर आर्किंग आपको हेल्प करेगी इन रीडिंग फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज आई फील वॉट विल हैपन इज फॉर द पीपल हु गेट डन विद द इंटरव्यू वेरी क्विकली, you would have a period of dread just waiting for the results, because then you're done with the entire process. Now it's just time to wait. For the people who get their interview towards the end, simply seeing at least like 20-30 transcripts a day on Telegram and trying to prepare every single day and having exactly not a syllabus in your hands is going to be very daunting and anxious. सो ये तो आप समझ लो कि चाहे आपका पहले आए या बाद में आए, आपको एंग्जाइटी होगी. To counter this, what I suggest everybody start doing is to instill a lot of confidence. And for that, you will have to be very practical. You'll have to have some Chanakya Niti sort of thing in your head. And by that, what I mean is, जब आपका result आ गया, most probably if you haven't told anyone, still your parents would know, your best friends would know. So वो आपको congratulate करेंगे, they will keep you on a pedestal. Okay. And it is very much okay for you to use that pedestal for your confidence, is what I'm telling you. This is also a sign from the UPSC that you are chosen to be. They feel capable that, okay, we are going to put some of the best minds of the country in front of you and check whether you are officer material or not. So somebody told me a few years back कि UPSC checks, that they are not making officers out of students, but they're picking people who are already officers and just clear the exam. So this is very true. तो आपको उस शूज़ में खुद को रखना पड़ेगा कि अब आप ऑफिसर के ज़्यादा मतलब दूर नहीं हो उस पोस्ट से, जो भी आपकी डिज़ायर्ड सर्विस है. यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग दैट वे वेरी श्योरली. तो आप एक फेक इट टिल यू मेक इट वाला भी थोड़ा सा नुआंस रखो अपने अंदर. ऐसा नहीं है कि आपको वो स्टूडेंट मेंटालिटी में कि पीपल वे गाइडिंग यू, इन लोगों ने करंट अफेयर्स ऐसे ऐसे पढ़ाए तो आई हैव टू राइट इन द IBC फॉर्मेट, ऐसे एग्जांपल्स देना है मुझे, ये पैटर्न होता है ऑप्शनल में लिखने का. ब्रेक आउट ऑफ दोज मोल्ड्स and start taking a creative approach. Start having your own opinions and stay very, very confident. You guys truly are in the 1% of the country right now, and you should be acting that way. You should be owning it and wearing it as a badge. First things first. Second thing is, for most of us, I think पिछले 8 महीने में we have talked like literally less than what we have talked in our entire lifetime. तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है और डेफिनेटली आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उस पर भी पड़ता है. सो व्हाट विल हैपन इज वेन एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग, एक तो यू विल बाय डिफ़ॉल्ट फील अंडर कॉन्फिडेंट. आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर मीन्स यू वेंट आउट और सैट विथ योर फ्रेंड्स या फिर आप रिलेटिव्स के साथ में बैठ रहे थे, तो यू काइंड ऑफ डिड नॉट कनेक्ट विद देम लाइक यू यूज टू बिफोर द एग्जाम साइकिल. लाइक अगर आप शादी में जाते थे तो आप डांस वांस करते थे एंड नाउ यू विल लाइक सिटिंग इन द कॉर्नर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. This is again, I have noticed it happen again and again in the cycles with everyone. You have to start talking to anyone and everyone. Start having more and more discussions, and whatever language that you have opted, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, बट खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करो. एंड आई नो कि लोग बोलते हैं कि आईने के सामने एक्सप्रेस करो, बट दैट इज़ अ वेरी आर्टिफिशियल वे ऑफ ब्रेकिंग दैट मोल्ड. इट विल गेट द जॉब लाइक 5% डन एट मैक्स. You need to find some of the best read people in your circle, and you need to start just calling them, gossiping about something or discussing about anything, right? If I think most of the लोगों का इंग्लिश में होगा, हिंदी का है क्या किसी में? नहीं है, तो आप इंग्लिश में ही बात करो. ओके आकाश, आपका है हिंदी में? यस. ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप जो हिंदी रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स हैं जो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में बातें करते हैं उनको देखो और उनको पढ़ो भी. सो यू शुड बी पिकिंग अप वन बुक स्पेशली फॉर हिंदी एस्पिरेंट्स, कि ऐसी कुछ बुक पढ़ो जहाँ से आप अच्छी वोकेबलरी उठा सको. फॉर इंग्लिश पीपल एज वेल, यू नीड टू बी इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी इन जनरल. न्यूज़पेपर से होती है, बट वाइल यूर टॉकिंग टू समबडी, लेट्स से यू पिक अप अ न्यू वर्ड, until unless you don't use it very accurately in a sentence, let's say twice or thrice, you will not be able to naturally use it in the interview. यहाँ पे भी वही सीन है जो आप मेंस के टेस्ट सीरीज में लिख के आते हो, वही आप वहाँ पे एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाते हो. सिमिलरली, सो यू नीड टू बी यूजिंग दोज कीवर्ड्स and inserting them in your vocabulary to make your expression very precise. And I use the word precise and not beautiful because there's a reason behind it. You don't need to sound very polished. तो ये जो somebody told me कि they are from a tier 3 engineering college and maybe a tier 3 city, that is totally okay. मतलब UPSC ने आपको ठप्पा लगा के दे दिया है कि आप ऑफिसर मटेरियल लो, तो यू नीड टू ओन इट.
आप कहीं से भी आ रहे हो, यू हैव कम फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पॉश प्लेसेस ऑफ द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव कम फ्रॉम द पुअरेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, योर एजुकेशन लेवल डज नॉट मैच अप टू पीपल हु आर, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ करके आए होंगे एंड देन दे आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. सम पीपल भी लाइक कि BA रहेगा उनका सिंपल सा, वो रहेगा. तो यू गाइज आर एट द सेम लेवल. इफ एनी थिंग पॉसिबली कुछ ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके डैफ में विच विल पुट यू अहेड ऑफ दीज पीपल. वन थिंग आई नो फॉर श्योर, जो UPSC को नहीं पसंद आता है, दोज आर कुकी कटर पीपल्स. व्हाट आई मीन बाय कुकी कटर इज कि एक बंदा है जिसने ऐसे 11th-12th मैथ्स करी, फिर वो IIT चला गया, फिर उसने IIM कर लिया एंड देन दे गेव UPSC. दैट गाय विल हैव हॉबी लाइक वेरी सिंपल, जैसे रीडिंग बुक्स, a very generic hobby, or maybe watching TV shows or watching movies, something like that. So this is a cookie cutter person. Jo, you can find thousands of people like this when you go out in the streets, and you would know at least 5 to 10 people like that in your life. So UPSC does not want people like these. You might want to put something unique on the DAF which feels like कि ओके हाँ ये मैंने लाइफ में कुछ कुछ जेनेरिक चीज़ें करी हैं, बट जो इंटरसेक्शन होता है, दैट वेन डायग्राम ऑफ दीज 3 or 4 things that you take interest in, that you are good at, that you have that you are educated in, that should stand out as very unique. तो अगर you are someone who जो कोई फॉरेन वगैरह से करके आया, बट लेट्स से यू हैव वॉलंटियर्ड फॉर सम NGO and then you read a very specific kind of books, let's say science fiction वगैरह, and then you have taken an interest in any sports, that is a great combination in my opinion. It can be anything literally, but that combination and intersection of those things need to be unique. So I would suggest कि start working on that intersection of things rather than the discrete और थिंकिंग कि आई हैव अ जेनेरिक हॉबी, या फिर मैं इधर से आया हूँ, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं. नन ऑफ इट मैटर्स. आई कैन प्रॉमिस यू दिस बहुत डंके की चोट पे कि इट विल नॉट मैटर. ओनली हाउ यू प्रेजेंट योर थिंग्स, योर थॉट्स, the information that you lay out in front of the board, that is the exact thing that matters. Yes, Akash? Akash, अपने hand No, sir, it is done, sir. Okay. All right. तो सबसे पहले तो आप माइंडसेट शिफ्ट ले आओ. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि हर कोई एक केपेबल है, ठीक है. तो हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. यू डोंट नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट और कॉकी अबाउट दिस, बट प्लीज़ इफ़ यू स्टार्ट ऑन दिस नोट ना, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट होगी एंड यूल कैरी दिस एनर्जी थ्रू आउट योर इंटरव्यू. इवन आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी विल फ्लाई विथ नाइस स्कोर्स. देन some questions that we had was first interview and what are the beginning steps. Okay, so interview, when we talk about the UPSC panel, right, it is basically, everybody knows that it's a combination of current affairs, our static knowledge that can be asked, and our DAF mainly. Apart from that, there are certain qualities that dominate the entire interview and like paint it in its color, which can be कि आप कैसी चीज़ें present कर रहे हो, what is your unique flair that you bring to the entire experience of the interview, what personality do you keep on the table, all of these things. But elements की बात करें तो वो 3 चीज़ें ही रहती हैं. इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रोलेबल एलिमेंट जो है वो आपका डैफ है. तो आई वुड रिकमेंड that if you can go online after this session and study Mr. Abhishek Saraf sir's interview technique, that will be very helpful. So मैं ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू लास्ट फॉर मैक्सिमम हाफ एन आवर एंड दैट हाफ एन आवर्स इज़ योर्स टू मैनिपुलेट एक्चुअली. तो आपको लिटरली साम दाम दंड भेद करके उनको बिलीव करवाना है कि आई एम एन XYZ person, I am desirable on all the qualities that they are judging. And by the way, if you read the actual notification of the UPSC, which talks about the interview, you would find out कि exactly जो 275 का score है ना, उसको आप उन qualities के through 5 से divide कर सकते हो. It is divisible by those numbers. तो you'll find कि the number of qualities into 5 equals 275. And you can imagine what kind of table they might be having to score you, कि इसने इस quality पे कितना score किया, इस quality पे कितना score किया, and that is how the total is made. So that is why the subjectivity comes in the interview. Most probably, if you are lacking in 1 or 2 of these qualities, you might, let's say out of 5 you're getting 1 or 2 or 3 at max. But most of the times I felt कि
they might be liberal in giving you marks if you've proved yourself on that front कि हाँ मेरे पास metal है and these are the facts that I'm putting forward. तो डैफ अगर आपका सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एरिया है, मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको फाइनलाइज करना शुरू कर दो. इसमें सबसे बड़ी जो आपको देखना होगा आपका एजुकेशन. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू फिल स्पेशली इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. उस पर रिविजन यू शुड स्टार्ट. At least the major themes that are there in your subjects along with your optional, that is something you should be revising. Now when you study this one particular subject, somebody asked कि उसको कैसे efficiently cover करना है. तो what I recommend is, let's say आपका anthropology optional है, like it was mine. I don't want you to read the entire syllabus and revise thinkers and examples and remember the diagrams like you used for mains. I want you to focus on the areas which are sort of interlinked with everything else. So let's say anthropology, it is linked with tribal administration, it is linked with the health of the population, it is linked with culture and language as well. So I want to ask myself कि यार मैंने जो subject पढ़ा है, this study of anthropology, how I can bring it to anywhere that I might be working in, right? So let's say I am posted in ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन के लिए डील करता है. लेट्स से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन द कंट्री और इन वन सर्टेन स्टेट. हाउ वुड आई यूज द एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज टू कैरी दैट वर्क फॉरवर्ड? और इफ लेट्स से आई एम वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, so how would I use this anthropological knowledge in that particular thing? And then you want to take a further step back, look at the big picture of the subject whatever you're reading, and what is the latest thing that is happening. How they might ask you a very simple question like, just tell me how is it relevant in today's day. So, and this was by the way first question in my panel as well, that you have studied anthropology, tell me how it is relevant what we're doing latest in anthropology. This is how Sanjay Verma has started with me. So you have to be ready for this big picture stuff and keep on sprinkling this throughout your interview a little bit. Okay, this is I think one of the best ways, that the first step that you can take. पहला टैफ फाइनलाइजेशन. अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो कि ये सब्जेक्ट्स के बारे में मेरे पास पूछा जा सकता है. उन सब्जेक्ट्स की एक स्ट्रैटेजी बना लो कि what is the shortest material, the most efficient material which will get me to cover this thing in a very short span of time, let's say 2 weeks or 3 weeks maximum. That is one great way to start. Second is hobbies and achievements. अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स में आपको कॉलेज लेवल का सबसे पहले लिखना है, बट अगर स्कूल लेवल में कुछ है तो एक दो डाल सकते हो. ऐसा नहीं करना कि बहुत हेजिटेट कर जाना कि एग्जैक्टली कॉलेज लेवल ही पूछा है. यू कैन फिल 1 or 2 एट स्कूल लेवल, यू डोंट, इट डज नॉट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें पूछते हैं कि आप हॉबीज़ का सर्टिफिकेट दिखाओ, अचीवमेंट्स का दिखाओ. दिस इज़ नॉट वॉट इज स्कोर्ड अपॉन, दिस इज़ जस्ट अ मार्कर फॉर देम टू आस्क यू क्वेश्चंस. सो यहाँ पे बी वेरी श्योर कि ये आपके अचीवमेंट्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वही लिखना है. आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा आने वाले दिनों में, मे बी आज रात को, कल परसों, आप 1 से 2 घंटा निकाल के बैठो with no distraction at all, phone switched off, sit with a pen and paper and replay the last 5 to 6 years of your life in your head. What has been the highlight of your life? कहाँ पे आपने कुछ सर्टिफिकेट्स जीते होंगे, कोई मे बी छोटी सी 5 किलोमीटर वाली मैराथन में पार्टिसिपेट किया होगा, मे बी यू देयर वाज एन इवेंट इन योर कॉलेज एंड यू बिकेम द इवेंट मैनेजर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन and then sort it out कि what is the most relevant, जहाँ पे you would feel very excited to talk about. Be very sure what are the words I'm using. I'm not saying that you'll be very sure or confident to talk about. I'm telling what is the thing that you're excited to talk about. तो जो भी चीज़ आपको एक्साइट कर रही है ना, उसको मेक श्योर आप लिखना. I know this sounds very cliche and slightly impractical, but believe me, when you go down the line, the questions that they ask, these people are so damn experienced that you'll be surprised by the things that they know. And the things that we have only imagined and read on paper, these people have lived these things for a decade. And I used to think कि हाँ क्या ही पूछ लेंगे, बड़ा फॉर्मल होता होगा and all of these things. But when I worked closely in MP Tourism with Mr. Shivshekhar Shukla, who's the Principal Secretary of Culture and Tourism there, I really realized, extremely senior IS officer, but the kind of hold they have on things, the policies, the acts which play a big role, the heritage that is there, literally art and culture के portions that we can only think to memorize about, they know it so intricately well कि you cannot bullshit your way around it. So you have to be excited.
they will let it go if you have half baked information, or you're, let's say, ill informed about something. But they will not be able to miss your excitement and curiosity in one particular thing. So you can get away from that situation with honesty. But if you try to fake something, you'll be caught literally on your second step. So make sure that you sort these things out without any distraction. And then talking about hobbies, हॉबीज़ का सीन ऐसा है कि आप 3 से ज़्यादा मत लिखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो 3, अगर जिसके पास, लाइक माई केस, आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट एंड आई कीप ऑन डैबलिंग विद देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू राइट एंड वॉट नॉट टू राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज, अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट करी है हॉबी, राइट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे लिख सकते हो। You will have to read about it. No matter what you write, you will have to read about it a little bit. तो बहुत recent start है, बहुत पुरानी हॉबी है, it does not make any difference. It should be genuine is what I'm saying. आपकी उसमें genuine curiosity होनी चाहिए कि जब आप अपना खाली टाइम मिलता है तो आपको मन करता है naturally उस चीज़ को करने का. It should not be something forced. It's very much okay that you're not into reading books. You don't have to follow कि मुझे कोई ऐसे so called intellectual hobby लिखनी है, or that I like to learn new languages, or I like to volunteer for NGOs or something like that. Not at all. It can be extremely simple hobbies. Second thing about hobbies is, do not throw a very wide net on one particular thing. Don't write reading books as your hobby. What genres do you prefer? Write that. If you like music, if you like listening to music, what genre of music do you like listening to? Write about that. If you sing something, right, let's say singing is your hobby, where do you sing? Do you perform shows? Do you perform small gigs? Or let's say you use your singing talent to just sit with your friends and jam. Do you sing on social media and post small reels? Be very specific about the hobby that you are doing, because उससे होगा क्या कि it will give them a very nice segue on how to ask questions. Let's say you write this कि singing on social media, and really it can be a hobby for some people. It like very naturally can be a hobby. Then they could ask questions on the overlap that happens between music and social media. So how do you handle licensing or copyright issues on music online these days? That becomes a question. And that is something that you have invited for yourself, you have created for yourself. And believe me, when you have 20-30 questions on table and you have no lead to go on, when you create a question like that, it becomes an extremely big leverage. The ball is in your court, and now you play how you want them to play. So इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने डैफ में जितने हुक्स डाल सकते हो आप इस तरीके के, वो हुक्स आपको डालना है. तो obviously there is a thing of balance over here. You don't need to make it very weird, very niche, but also don't cast an extremely wide net. Reading books, music or something like that. So if you're into fitness and all, be very precise about what fitness. If you follow sports, then mention what sports do you follow. So in my case, I wrote that I write books, blogs and poems, and then I played the guitar. These were my hobbies. And I was very sure that if I've written books, and writing books is something that I knew that would catch their eyes, and it really did. So in my case, this was true because I had written a book by that time and published it. So they asked the question, which book have you written, which publisher published it, all of these things. So, and they said, naturally you must read as well. And I said, yes, I do. So what do you read? What inspired you to start reading? And I told them, and then he was like, oh, so you haven't read Arundhati Roy or Aravinda Digga? And I was very honest. No, I haven't gotten around to reading it, sir, but if you recommended that, surely give it a shot in the coming few weeks. This is what I said in all honesty. And so you can imagine कि ऐसे questions आपको hook draw करेंगे, तो you have to put more and more things like this. If you can make them very multi-dimensional, the better it would be. Because let's say आपने एक आपके पूरे DAF का theme है. Let's say you are a very academically oriented person, and all your hobbies and all your achievements are also very academically oriented. What will happen is, let's say there's a very esteemed professor sitting on the board. He would pick that question, and he would be the only one who would asking me on that theme, on those lines. So let's say कि you have a PhD or something, or you have done masters in what, so that academia वाला person will pick that thing, and because आपकी hobbies भी उससे related है, आपके achievements भी उससे related है, that whole segment is over with one person. Now the other person, let's say, who is from a cultural background, or the other person who is a retired foreign service officer, they would not be able to ask you anything because आपका DAF खत्म हो गया.
तो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ से अलग अलग थीम्स निकालो, अचीवमेंट्स, हॉबीज़ अलग हो, एंड मेक श्योर कि वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए, सो दैट यू क्रिएट मल्टीपल हुक्स एंड मल्टीपल कन्वर्सेशन स्टार्टर्स इन योर इंटरव्यू. ओके, तो इस चीज़ों पे थोड़ा आप सोचना शुरू कर दो. As for the cadre policy and the service preference, if you want to talk about the IAS versus IFS wali debate, I can take separate sessions because my first preference was foreign services. So I know बहुत question आता है लोगों को. Maybe we can talk about it for half an hour on a separate session some other day. बट इन जनरल आई थिंक मोस्ट लोगों का क्लियर होगा सर्विस प्रेफरेंस क्या डालना है. मेक श्योर कि यू आर क्लियर अबाउट IRS, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस का अभी थोड़ा स्क्यूड कुछ सालों के बाद रेशियो हुआ है, उसके बारे में यू आर वेल अवेयर. रिसर्च अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. Also look into some other great services as well. For example, audit and account services or the corporate law services. These are some really underrated services in the UPSC list. So you might want to put them on top and gain some leverage. Let's say that you get a rank in the middle, so you would be highly placed as opposed to other people and get that service quickly. That is one thing. Secondly, cadre policy, I think it would vary for everyone. Again, there are a lot of great YouTube videos online that you can watch to understand the cadre policy. First of all, what are the how it is divided into various zones, and then fill it nicely. एंड ये सारी चीज़ें एडिट करने का मौका फिर से मिलेगा अभी DAF 2 के टाइम पे. सो अगर पहले आपने कुछ भी भरा होगा, दैट इज़ फाइन, यू कैन ईजिली अपडेट इट राइट नाउ, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. एंड अभी से सोच के रखोगे तो उसको डिले मत करना, मतलब जल्दी भर के क्लियर इट आउट. देन इट वॉज अबाउट करंट अफेयर्स, राइट. अब करंट अफेयर से पहले ये जो पहला स्टेप था दैट इज़ ओवर. लेट्स यू गेट स्टार्टेड विथ योर DAF. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स. अब ट्रांसक्रिप्ट्स में क्या होगा, आई हैव रियलाइज्ड कि आई वॉज एबल टू फिट एवरी क्वेश्चन इन टू अ साइलो और अ स्टेंसिल. What I mean by that is every question that the interviewer asks is either of this one type. First of all would be an opinion based question. Like, okay, tell me about this. It's a very open ended question and they're inviting an opinion. So you need to have opinion on things. Somebody asked me about this कि ये balanced view रखना चाहिए कि opinion रखना चाहिए. I will tell you my own personal experience and what I have told other people when they went from like 170s to 200s. मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना था कि बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए. इनफैक्ट आई विल टेल यू, इंटरव्यू के 10 दिन पहले तक मेरा भी ओपिनियन ये था. एक ट्रांसक्रिप्ट आई थी टेलीग्राम में विच वॉज अ वेरी वेल रिटन ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट गाय इज इंटरप्टेड इन बिटवीन and the chairperson says, I'm forgetting the names of it, but I very vividly remember this section of that transcript. It said कि ठीक है, ये तो आप हर तरफ की बातें कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप क्या मानते हो. ही वॉज वेरी एडमेंट कि आप क्या मानते हो. एंड देन द गाय मस्ट हैव सेड समथिंग एंड he was like, he, what the guy described the scene was like he threw his pen, sat down and said आजकल लोगों में बेबाकी नहीं रह गई है. He used the word बेबाकी नहीं रह गई है. And then I have seen interviews, transcript and explanations from people back from Manish Kumar, the hardworking human channel, right? So that guy literally had a fight with one of the chair persons in the interview, a very heated argument sort of thing. And then also he emerged with 200 plus score. So that told me that UPSC is really avoiding having strong opinions and people who stand up for them. तो आप कुछ भी ओपिनियन रख सकते हो. ऑब्वियसली इट शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव. इट शुड फिट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम एज वेल, इट शुड फिट इन टू द एथिकल पैराडाइम एज वेल, नो डाउट. बट विद इन दोज बाउंड्रीज यू आर वेरी मच फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन. ओके, तो अपनी जो एक ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी है उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना. इफ़ यू फील इट इज़ अ लिटिल बिट लॉस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट you again sort of start finding yourself, that what is your voice, how do you present your arguments, what are the true opinions that you believe. Because pretty sure throughout the journey of this UPSC we're exposed to new ideas, new academic content, and our thoughts go through a change, and that's okay. So whatever those thoughts are, हर चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन बनाओ. Whether it is the Israel-Palestine issue, how we have to change our foreign policy, what is the issue with, let's say, pollution in our country, or how do we regulate free speech right now. ये सारी चीज़ों के ऊपर you should have your own opinion.
And then you should discuss very elaborate arguments as to why you believe this. It should be primary, कि उसका primary effect क्या है, then secondary, what is the spillover effect, and then a tertiary long term effect as well. So you need to think to that 3 degrees of any topic. Especially कुछ themes रहेंगे जो 100% आपके इंटरव्यू में फीचर होंगे. I can create this list for you, and obviously in the coming days I'll be working very closely with all of you to do this in a better way. But जो themes हैं आप suppose ऐसे में tackle करते हो, right? Let's say it's about environment, climate change. It's about diplomacy and reducing our import bill. It is about the reducing globalization and the increasing meanness of the world, so to say, जो एक mains में भी question था. और the agricultural issues that pain all of us, or let's say this discussion about Viksit Bharat and our per capita GDP being low. All of these things are something जहाँ से questions बहुत अच्छे से आ सकते हैं, especially for these major topics, right, which dominate themes in news, which let's say any time you would have an argument on agriculture का कुछ भी angle आएगा. आप farm loss ले लो, आप ethanol ले लो, आप multi cropping ले लो, you talk about fertilizers, you talk about credit of farmers. It would in the end boil down to one thing, that is farmers की income कैसे बढ़ाते हैं, right? You all have read the Ashok Dalwai committee and all of those things. So I would urge you कि for every theme that we have studied in UPSC, make sure you are very much well versed with the basics. Because मेंस में अभी हमारी थिंकिंग कैसी हो जाती है कि एक कोई टॉपिक आया एंड योर ब्रेन रशेस टू थिंक कि क्या वैल्यूडेशन है मेरे पास. You would think कि यार ये कमिटी रिलेटेड थी, all of this data I have, what are the best practices from international, what are the best practices in India. This is what your mind rushes to. But now what you have to do is, if you come across a topic or an argument, you have to take down to its core. Ki, why is it being discussed at this length? What is the core issue of this? How does it affect India? To start thinking in first principles. Sometimes, not sometimes, a lot of times actually, people who had great interviews, right? I talked to them personally, face to face, and every time they would have one or two instances in their interview where the chairperson would ask them something and they would just begin to answer that question, but they answered it with such first principle basic perspective that the interview panel knew instantly कि he knows what they're talking about, he or she knows what they're talking about. So every topic would have this one core issue at its center. Make sure you hit that core in the first line or second line of whenever you're speaking. Also, there should be structure in your speech. So whenever you start speaking, make sure you're timing yourself कि average answer की length कितनी जा रही है, उसको 1 से 1.5 मिनट के बीच में कैप कर सकते हो तो अच्छा रहेगा. So it will also force you to express your thoughts in very brief manner and then objectify those thoughts and also insert a little bit of value addition. जो डेटा वाली बातें हैं, जो value addition की बातें, वो यहाँ पे भी काम करती है. It's just that you have to present it in a different manner. Also, you don't have to, when you're presenting this data in between your answers, right, you don't have to act like a know-it-all as if you know this data. Think of it as a conversation कि let's say आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे कि यार परसों मैं वो न्यूज़ देख रहा था, उसमें ऐसी चीज़ आई थी, आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर दैट डे, यार मैंने वो बुक पढ़ी थी, उसमें एक ज़बरदस्त आइडिया उसने लिखा हुआ था. दिस इज़ हाउ यू टॉक, राइट? सो दिस इज़ वेरी मच ओके दैट you in a little bit formal tone you present it to the examiner, that you start your answer that so day before yesterday I was reading the newspaper and there was an article by XYZ person and they stated like this. This shows not only that you are reading these sources, that is fine, but this shows that you're a team player. You give the credit where it is due. You talk naturally. You don't structure your answer in a way and then fumble it out in a very polished manner and make it seem fake. So ye natural conversational tone is also very much fine. I think it's recommended that you have a tinge of informality. Also, I think this is something very risky, but I highly believe in. People who have humorous interviews tend to score higher. So if you ask anybody who has scored 190s or 200s, they would 100% tell you that they had a moment where the panel burst out laughing over something, or they had an inside joke going on, or you said something which was taken in a humorous flavor. So if you can create instances like these, I know it's very, 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 very tricky and it's a very slippery slope, but
believe me, if you work for, let's say, next 1 or 2 months, when you give the mock interviews, there will be opportunities where you can lighten the mood a little bit, and you can touch upon topics, so you can have some wordplay. You need to have that command over language to pull this off, by the way. But if you can lighten the mood a little bit in between, you would have a great time and they would have a great time, and your anxiety would be out of the way. So this is something that you can keep in mind. Another thing was about interview courses and Delhi की utility. This is again my personal opinion. मैं किसी को जाने से रोक नहीं सकता, but Delhi की हालत बहुत ख़राब है. Ask people who are there right now. Security issues are there, health issues are there. As per my personal preference, I did not go to Delhi. The only time I went to Delhi was for 2 mock interviews, and that was it for me. So apart from that, I did not go to Delhi. In fact, I showed up 2 days before my interview date, just to in the name कि I'll be acclimatized to the environment and थोड़ा adjust हो जाऊँगा ऐसा वैसा. What ended up happening was I felt extremely sick on the day of the interview. I could only sleep 2 to 3 hours. I got extremely upset stomach. I had vomiting. I could not eat like a single grain of breakfast on the day of my interview. I had just ORS जो आता है, that, and then I gave the interview. So that also led to a little bit anxiety. So make sure you don't fall into such cycles. So I would say कि Delhi जाना मेरे हिसाब से तो avoid कर सकते हो. All the good discussions are happening online. So if you can find a great closely knit community, let's say आपको अपने स्टेट के लोग मिल जाते हैं, अपने ऑप्शनल के लोग मिल जाते हैं, 5 से 7 लोगों का ग्रुप बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज उसमें टाइम फिर ज़्यादा जाएगा, divergences ज़्यादा होते हैं. Even in this group, right, we can have similar looking people into cohorts of like 5 to 10. That would be nice, and you can have discussions on a daily basis. Sit down for 2.5 hours, prepare questions, and if you discuss among yourselves and put yourself in that situation ki okay, suddenly a question comes and now I'm supposed to articulate my thoughts very quickly, that needs to happen. And on a daily basis, I mean it literally, that will give you the best return so far. देन कोर्सेज जो हैं, कोर्सेज महंगे कोर्सेज ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट कुछ डैफ एनालिसिस लोग करते हैं. फॉर एग्जांपल खान सर का बहुत फेमस है, और फोरम के आयुष सर का बहुत फेमस है. दीज आर 2 थिंग्स दैट यू कैन गो फॉर. एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने पर्सनल चॉइस ली थी कि मैं 2 से 3 ही मॉक इंटरव्यूज़ दूंगा, बिकॉज मेरी ओरिजिनलिटी वॉज नॉट कमिंग अप इन एनी ऑफ द मॉक्स. And I knew कि this is something that the right person would be able to appreciate in the real interview. I genuinely believe I had that level of confidence. I have a unique profile. I will play on my strengths. Every one of you needs to have this, by the way, क्योंकि हर प्रोफाइल में वो ऐसा इंटरसेक्शन बनेगा सारी चीज़ों का कि आपकी यूनिकनेस पे आपको खेलना है. तो हैव दैट कॉन्फिडेंस. सम पीपल ऑल्सो गो फॉर 10 मॉक्स एज वेल. चहल अकेडमी का एक मॉक होता है, राइट. चहल अकेडमी व्हाट दे डू ब्रिलियंटली इज़ कि वो आपको मॉक के लिए बुलाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा 5 स्टार में खाना वगैरह खिलाएंगे. इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एंड द पैनल दैट सिट्स ओवर देयर इज़ वेरी एस्टीम्ड. So like literally people who are serving right now in very nice places, you might find some familiar faces also. आपने उनको कहीं पर देखा होगा. So ये चीज़ को आप ध्यान रखें. एक मिनट, somebody pinned themselves. Yeah. Chehel ka mock, I would recommend that everybody does, because not only do they conduct the mock, they get you in a group and then they keep on taking certain sessions as well in between. So they would invite people from nice places, and you'd be interacting with officers while you're preparing for the interview. So Chehel is one thing I can recommend, Khan sir and Forum, I guess. बाकी mock interviews तो आप कहीं भी दे सकते हो. It's always a pleasant experience. Then the question was about CAPF versus UPSC interview. So I think I'll keep this brief, but yes, there are differences. Panel के number of members कितने हैं, the themes that are asked in the interview. यहाँ पे you would get a much wider umbrella of the questions that can be asked. तो जो ambit और जो gradient है questions का, वो बहुत ही wide हो जाता है. You have to be prepared for anything and everything. Predictability goes down significantly. You have to go through like a lot of volume of transcripts. Be good at least the basic GS subjects like economy, polity, ये सारी चीज़ें, and you're optional. तो I think CAPF का जो interview है वो थोड़ा shorter रहता है, and it's much more to the point. It can be also factual at times. I know because Shagun Agarwal, right, rank 1 of CAPF, is from my mentorship group only. So he told me his interview experience, and I found that distinct like जो differences थे उसके बीच में.
So I think you'll have to work in a similar manner but in a slightly different direction. But उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पता है कि वो कॉन्फिडेंस है सामने बैठने का, 5 लोगों से बात करने का अच्छे से पोलाइटली, तो यू विल सेल थ्रू वेरी वेल. Mistakes to avoid. Okay, so I'll start with the very basics. इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. तो अब अगर इंटरव्यू आ गया है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ ऑल्सो अ लिटिल बिट. इफ़ यू फील यूर ओवरवेट, आपको मेडिकल के दिन दिक्कत हो जाएगी. आई नो ऑफ समवन जो मेडिकल में गया था एंड देन उनका सिलेक्शन प्रोविजनल हो गया था बिकॉज दे हैड टू लूज वेट एंड कम बैक आफ्टर 3 months और 2 months और समथिंग लाइक दैट. ऐसा भी होता है. Please avoid taking any psychiatric medication or any drug that might show in your urine test or blood. So I think most people would get what I'm talking about. You're wise regarding this, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा, बिकॉज होता है बहुत अच्छा खासा मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पे. तो डोंट डू एनी स्टुपिडिटी अराउंड दैट टाइम. Another thing is start working on the attire that you will be wearing. अगर इफ़ यू आर अ गाय तो आई वुड रिकमेंड गेटिंग अ टेलर्ड सूट. रेडीमेड के लिए मत जाना. बहुत अच्छे अच्छे टेलर्स रहते हैं. आई थिंक मोस्ट पीपल विल शेयर कॉन्टैक्ट. अगर मेरे आसपास हो तो आई कैन रिकमेंड यू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. बट बड़े ग्रुप्स में भी यू कैन आस्क समबडी और योर सीनियर्स हु हैव अपीयर्ड, बिकॉज दैट मैटर्स रियली. Try to make it the attire should be fit the brackets that we have. So whatever has worked well for people in the past, सारी लोगों की पिक्चर्स डली रहती है यूपीएससी भवन के सामने. उन पिक्चर्स को देख के यू कैन गो समथिंग ऑन दोज लाइन्स. तो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट हैपेंड विथ मी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने लोग शैबी कपड़े पहन के आते हैं वहाँ पे. Especially for guys, I have seen that they would have a skinny tie. Guys that जो एकदम लाइक वेरी यंग किड्स वेयर सॉर्ट ऑफ, जो पतली सी टाई रहती है एकदम, वो पहन के आ जाते हैं. दैट डज नॉट वर्क. यू शुड नॉट हैव लाइक स्किनी पैंट्स एंड आपका लाइक पैंट इज़ लाइक एंडिंग बिफोर योर ये एंकल्स, और या फिर आपकी टाई बहुत पतली है, आपके बटन्स आर नॉट नाइसली डन. तो यू शुड हैव दैट फिनिश एंड पॉलिश इन योर अटायर लिटरली. एंड तो make sure you get a nicely tailored suit and know what is a formal suit actually. Don't go for skinny pants जो एकदम taper करते हैं towards the end. For the ladies in the group, I would recommend कि आपकी जो साड़ी है, if you can make it thematic, do it, because इस पे questions आते हैं. That is one of the things that you can leverage actually. तो अगर वैसा कुछ आपको थीम मिलता है कि ये ऐसा बाग प्रिंट है या फिर कुछ जीआई टैग वाली साड़ी है, तो गो फॉर इट. Wear it with confidence, have that elegance, and walk in the interview. I'm sure that has an effect. आपकी body language जो है, it should be a little bit submissive and docile. It should be pleasant and not rushed. What I've seen is people who show up outside the office that day, they're so anxious, they're literally rushing, like उनके हाथ से documents गिर रहे हैं, they're not able to keep track of things, कि फ़ोन यहाँ जमा किया, बैग वहाँ रख दिया, and then they're taking care कि पीछे से मम्मी पापा आवाज़ दे रहे हैं, उनको बाय करना भूल गए. All of these things happen. तो उस दिन थोड़ा टेंस माहौल रहता है. You have to be very very calm, कि as if you're already in, you're just paying your dues, is what I say. तो ऐसा अज्यूम करके चलो कि हो गया है, आप ऑलरेडी एक ऑफिसर हो. अब नाउ हाउ वुड एन ऑफिसर थिंक? इट्स जस्ट दैट कि यू आर ऑलरेडी इन द सर्विस, यू आर गोइंग टू हैव अ चैट विद सम ऑफ योर सीनियर ऑफिसर्स हु आर a lot senior than you, but you're just going to have a chat and they might poke you around a little bit. Think of it this way. So you'll have that calmness. Cut suits me भी leverage कर सकते हैं क्या इटालियन से? आई थिंक जो इटालियन होता है इट्स मोर क्लासी, तो टेक अ चॉइस. बाकी नॉट्स वगैरह में यू कैन बी क्रिएटिव, लाइक गो फॉर एन ऑक्सफोर्ड नॉट वगैरह टाइम में इफ़ यू कैन. तो वो चीज़ भी हेल्प काम करती है. when you like walk in the door towards the room, and actually you'll be surprised how small the rooms are over there. तो वो अपने अपने कैबिन में ही इंटरव्यूज़ लेते हैं. जो जैसे राज शुक्ला सर का कैबिन रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा है, बट वो अपने कैबिन में ही वैसी सेटिंग बनाएंगे कि पीपल. तो मेरे केस में इट वाज लाइक अ वेरी ऐसा सर्कुलर टेबल एंड आई वाज सिटिंग, जैसे चाय पी रहे हैं इतने डिस्टेंस में, 5 people in front of me and I was on this one. एंड बहुत प्यारी सेटिंग रहती है एक्चुअली में. यूल बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. दे डू अ गुड जॉब एट मेकिंग यू कंफर्टेबल ऑल्सो. ऑल ऑफ देम डू इट. तो whenever you enter the room, do it very slowly with mellow steps. Don't rush through. Close the door behind you very politely. Ask to sit down, and then whatever they start with, just keep on answering. So you'll feel that flow kick in 10 minutes after starting the interview.
or if they are feeling humoring you, then maybe 5 to 7 minutes, then it might happen quickly. When you're leaving to get up, तो चेयर में जो आवाज़ आती है बहुत, लाइक मेक श्योर अगेन यू डूइंग इट एलिगेंटली. एक बार अंदर जाते समय मेक श्योर यू गेट योर बैक साइड सीट, कि आपके लाइक बैक पॉकेट से ऐसे रुमाल तो नहीं लटक रहा है, और या फिर मतलब ब्लेज़र का एक साइड आपके बेल्ट के अंदर टक इन हो गया, एक साइड बाहर है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स देखा है मैंने होते हुए, रियल लाइफ सिनेरियोज. तो हैव समबडी हु चेक्स यू आउट, लाइक टॉप टू बॉटम एकदम प्रॉपरली, हेड टू टो, बिफोर यू वॉक इन. सारी चीज़ें उतरवा दी जाती हैं, नो रिंग्स, नो रिलीजियस सिम्बल्स, नन ऑफ दैट. सो मेक श्योर कि ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो ले जाने का कि लकी चार्म वगैरह है, तो लीव दोज थॉट्स असाइड. ओके. Yes, I was telling my own personal story. So what I did was कि मेरे पास एक tie थी which belonged to my grandfather, and it had like prints on it, very elaborate prints by the way, and अच्छी थी, elegant थी, but it was definitely standing out a little bit. So as soon as I'm walking, now Mr. Sanjay Verma sir is a man of culture. I have immense respect for him. In fact, everyone on the panel, but he has this specific taste which I really admire. So the first thing he noticed was that I have a tie with impressions on it, and that's what he asked me about. That you're the only person who is wearing this kind of tie. So what's the story behind it? Where is it made? And I told him that it's made in the US. So then I told him कि it belongs to my grandfather and all of those things. So there was a 3 to 4 question discussion just on my tie, and I felt really lucky in that moment because of my originality, because of my uniqueness. The thing that I was trying to do in my DAF, thankfully my outfit did it as well. So if you can create that opportunity, obviously there's no guarantee कि they'll pick up on that hint, but still if you can create it, अगर इतने सारे लोगों में से किसी एक दो का भी लग जाता है, तो consider yourself lucky. The ball again falls in your court and you can play it your way. Mindset हो गया. Mistakes के बारे में I'll talk about. कि first mistake is don't lie. I'm surprised, like बोलते बोलते कितने लोग ऐसे झूठ बोल जाते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, एंड देन दे गेट कॉल्ड आउट. इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो. इट शेक्स योर कॉन्फिडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट इज लेफ्ट, एंड ऑल्सो इट शोज वेरी पुअरली ऑन योर इंटरव्यू. सेकेंड इज don't have extreme opinions. Be very sure what being politically correct means. Don't say something that goes against what the government is doing. I know you might have personal views. I know you might have beef with the government. Everybody has their own differences with the current policies or the current government that is in power. So if that is true, still make sure कि if you are criticizing something, criticize it structurally. Okay, don't criticize the very specific policy schemes or the steps that the government has taken. Point out flaws maybe that exist in the institution or in the structure as a whole, or let's say in the performance or delivery of the system in general. Those are some things that you can criticize, very rightly so, but don't go attacking something even in between the lines as well, because that might happen. तो जब आप अपने मॉक्स वगैरह दोगे, व्हेनेवर यू हैविंग दिस डिस्कशन, आप अपने स्टेटमेंट्स को 2 बार एनालाइज करना कि इसका कुछ इम्प्लीकेशन तो नहीं निकल के आ रहा है. समटाइम्स यू माइट क्रिएट ट्रैप्स फॉर योर सेल्फ एज वेल. सो लाइक आई टोल्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो टेंजेंट्स आपको खोलने पड़ते हैं, वो खोल के देखना व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. बिकॉज कई बार होता है, देयर माइट बी अ सेगमेंट इन योर इंटरव्यू वेयर यू विल आंसर समथिंग, आपके आंसर में से कुछ उठाया जाएगा, फिर उसके ऊपर पूछा जाएगा, फिर सेकेंड आंसर में से कुछ उठाया जाएगा, फिर उसके ऊपर पूछा जाएगा. तो जैसे इफ़ यू रीड माई ट्रांसक्रिप्ट, तो यूल फाइंड आउट कि इट स्टार्टेड विद एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में उन्होंने पूछा कि ये होता है कार्बन फुटप्रिंट और बायोलॉजिकल फुटप्रिंट, इस तरीके से हमने पूछा कि उसमें क्या डिफरेंस होता है. वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम एनी बेसिक एनवायरनमेंट बुक. आई आंसर्ड इट, एंड देन दे आस्क्ड मी ओपिनियन अबाउट कार्बन ट्रेडिंग एंड मैकेनिज्म, कि कार्बन टैक्स लगा है. देन दे गो एंड आस्क मी कि अच्छा ओके, यू गेव दिस एग्जाम्पल अबाउट छत्तीसगढ़ एंड हाउ ग्रास रूट में ये हो रहा है, तो कैन वी क्वान्टिफाई द ट्रीज. सो आई वॉज like yeah, we can quantify the level of carbon sink that we create. No, he said can we monetarily quantify trees into something. And I had a small discussion about it. I was not sure, but I sort of hit the point. And then he goes, so do you think that Chhattisgarh budget has a section where there is like a monetary value of all the forests that are there in the state? And I said
No, sir, no idea. So there will be one question or one segment of your interview where one of the panelists will try to take you to the very end of your knowledge. They will try to get you to fumble somewhere or the other. So this is a test कि आप कितना how quickly you get annoyed and how well you perform under pressure. It is a test of exactly that. How far can you go? Of course you're gonna get tired and there will be the end to that chain where you'll have to say, sorry sir, but I don't know this, I'll definitely try to read more about this. But the more you can extend that change to like one more question, give the individual something to indulge himself into, the better it will be for you. So in this particular time frame, make sure you don't mess up again with a lie or a very extreme opinion of yours. तो politically correct रहना है. Another mistake that might be there is that if you're very ill prepared, so you might have to say sorry consecutively, let's say 3 to 4 times. किसी ने कुछ पूछा, sorry I don't know, sorry I don't know, sorry I don't know. That also might show very poorly. So you will have to strategically create some safety nets for yourself. Let's say कि आपने एक बार sorry बोला, that's a very direct implication कि आपको नहीं पता है ये चीज़. Then let's say the second question comes, which is something you can take a guess at. So you politely go कि sir, I'm not aware about the exact intricate details. If I can have your permission to give you my theory or my opinion about it, or if I can take a guess at it, I would really appreciate it. Something on those lines. You can create your own, and you should have versions of these lines as well, by the way, because it might happen twice also. तो in इस केस में you can create opportunities for yourself. तो जो भी आपको पता है, to get that out of your system and in front of the panel. Another thing that I can recommend everyone is कि आप जो ये वे फॉरवर्ड वगैरह जैसे आपने सीखा है कि कोई भी चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है तो आपको वे फॉरवर्ड से कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे भी होगा वो चीज़ कि आपको ये बना दिया जाता है, इफ़ यू आर SDM ऑफ दिस एरिया, इफ़ यू आर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिस स्टेट XYZ, तो डोंट गो वेरी क्लीशे जो आप मेंस में लिखते आ रहे हो. ट्राई टू रीड मैक्सिमम एडिटोरियल्स. जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपका मोस्ट टाइम एडिटोरियल्स पढ़ने में ही जाना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि जो एक्सट्रीम ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं, वेरी inquisitive ideas that are there on the newspaper, you will gain through them and sit with those ideas and try to bring your own model into the picture. So for example, I'll tell you, जैसे मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी AD का इंटरव्यू था. So they asked me, this was a very expected question by the way, कि you are there from Chhattisgarh, which is not that developed and everything, बहुत पर कैपिटा GDP उतना ज़्यादा नहीं है और लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे आप कैसे स्पोर्ट्स डेवलप करोगे. सो आई हैड मेड अप माई ओन थ्योरी विच आई कॉल्ड लाइक टॉप ऑफ द पाइपलाइन, मिडल ऑफ द पाइपलाइन एंड एंड ऑफ द पाइपलाइन. सो देर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सब सोल्यूशन करके रखे हैं, दे ट्राइंग वेरी हार्ड. आप कुछ यूनिक नहीं बता पाओगे, बट हाउ यू प्रेजेंट इट ऑल्सो मैटर्स. It should have some sort of structure, like the government is constantly coming with these acronyms ki Panchamrit promises, and then Sabka Saath Sabka Vikas, PM Kusum is there, all of these acronyms. Why don't you make your own acronyms? That will be a creative point of discussion. That let's say they ask you ki why are accidents increasing in India, you tell them something ki sir, I have come up with a formula which I call as TRIPS, TRIPS. You expand upon that. It's your idea, and you get those 1 or 2 minutes to, it shows creativity that this is, you will not be able to come up with a very like novel ideas or patent karwa sako, obviously not, everything there, but how you present it matters way more. So this is the way I answer. Then there is one thing about being very constitutionally oriented. Let the constitutional principles, the constitutional morality guide you truly in every answer that you do. Principles of equality should be reflected, equity should be reflected. You should be thinking about the Antyodaya population, last mile connectivity of people. If you are answering generalistically, then also you should be feeling inclusive about tribals, transgenders, elderly, women. All these should be reflected somewhere or the other. They should run like a common thread between all your answers. If you can accomplish this, then for sure I think you'll have an edge over the others. बाकी तो I think I have covered almost everything. If I'm missing something, please feel free to add, or if you have any follow-up questions right now, so yes, Sadhya, you can go first. So one thing that I want to ask is, I mean, you must have some idea about how, let's say, a typical woman's interview is different from a typical man's interview.
If you have any insights. Yeah, I mean, having talked to Priyanka at length about this, I'm sure they're kinder to women. That is one thing I have felt. Actually, like visibly kinder to women. But that does not mean कि that will show up on your scores. तो आपका kind interview हुआ है या फिर the panel wishes you कि all the best for the result with a smile. That is no guarantee for a score. They are just, exercising that basic decency and respect towards you. तो वो एक चीज़ है. On the other hand, as a woman, you would be asked in some way or the other, on feminist lines, for sure. Okay, so they are testing the opposite things with you. So let's say कि they might even bring you to certain controversial areas as well. तो आपके thoughts they would want to see. ये एक चीज़ है. और largely I think as a woman there are certain ये जो stereotypes होते हैं, they would also want to test you on them कि how much do you believe in them, how much have you broken out of that mold with your mindset, all of those things. तो इन चीज़ों पे थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना. बाकी तो आई थिंक देयर इज़ नो एज डिस्क्रिमिनेशन एज सच. दैट इज़ आई कैन नॉट इवन पॉन्डर अपॉन इट और इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ है वहाँ पे. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. बहुत स्लाइट डिफरेंस रहता है मे बी इन द टोन और इन द वे दे फ्रेज देयर क्वेश्चंस, बट दे आर एक्सट्रीमली अकोमोडेटिंग. लाइक दिस इट दे डू अ ग्रेट जॉब आउट ऑफ मेकिंग यू फील कंफर्टेबल. Right, sir. Following up, I want to ask, जो थोड़े से, like you said, controversial topics, should we go ahead and read, let's say, official opinions? For example, this one mock interview that I saw, they started talking about gender identity and the concept of, do you believe in gender fluidity? So I think over there, the person started quoting the official Supreme Court's opinion that gender is a fluid concept. So I think, would it be scandalous to talk about such things because we don't know how Not at all. a Not at certain all. person might feel? Not at all. I mean, not scandalous at all. In fact, very appreciable actually. So please feel free to put your thoughts. Like I said, you have to be well read, and whatever opinions you hold, they should be justifiable. Okay. So let's say, expanding upon this very topic, you're talking about gender fluidity. A very common debate that I see floating around is what about transgender people who are participating in sports, right? So a person who transitioned from being a man to a woman, they call themselves a woman now, and they're participating in women's sports. How fair is that? So you need to be well read on this topic. You can hold any of the opinion. You have to defend it to the largest extent, and you would get opposition. You just have to be very much ready कि हाँ मैं काउंटर करूँगा. तो इनको पहले से एक्सप्लोर करके रखना, हैविंग दोज टेंजेंट्स कि अगर ये टॉपिक डैफ में कहीं से आ सकता है या फिर ये पर्टिकुलर पैनल इज़ आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो यू शुड क्रिएट दोज टेंजेंट्स बिफोर हैंड एंड बी वेल रेड अबाउट दिस थिंग. तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरफ लीन करो. बट हाँ, इफ़ द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच वोकल कि ये चीज़ हम ऐसे ही बिलीव करते हैं, तो और या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया लाइक यू सेड, तो better to stick to that thing only, and then have your opinions aligned to that in follow up. तो कई, like I said, कि those half an hours involve a little bit of manipulation. It's very unfair to say कि just be yourself and you'll do well. नहीं, ऐसा नहीं होगा. All right, sir. Thank you. Yes, Dilip is raising. Go on. Hello. Yes, sir. Sir, as you were talking about answering questions, I've heard about this that people say that you should avoid quoting keywords or including them because it might trap you. Is it the right approach? Keep it simple, एकदम language में answer करो, or if you're confident, Actually, like yeah, what very true, very true, very true. So, like you use the word keyword, right? So, I was telling Hmm. you towards the end of the sorry, the start of the session that note my words very carefully. I say that your speech should be precise, not flowery. Hmm. So, when you are introducing a keyword in your answer, वो caution इसलिए दिया जाता है कि don't bring up a keyword or open up a new tab or a tangent in your conversation which might be problematic for you, जहाँ पे well prepared नहीं हो. ओके, सो फॉर Right. एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ये चीज़ लिया कि आप बात कर रहे हो ट्रांसजेंडर का स्पोर्ट्स में इंक्लूजन ऐसा है वैसा है जो भी है, एंड यू ब्रिंग अप अ टॉपिक ऑफ लेट्स से surgeries of transgenders, right? Hmm. And about the hormonal treatment that they get. Now you have no idea
about this domain, how this goes on in India. What are the facilities if somebody wants to transition into a different sex? What kind of treatment do they get? What are the legal recourses that are available to them, or the medical educational aspect to that front? Now you have opened up a potential लैंड माइन जिसके ऊपर आपको बोला जा सकता है कि चलो भाई इस पे बात करते हैं. तो वो कहते हैं कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होके अपने आप को ऐसे रिस्ट्रेन रखो अपने आंसर्स में कि यू ओनली नेम ड्रॉप द कीवर्ड्स विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. अगेन द मैनिपुलेशन दैट आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर, राइट? सो आपको कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड में ये करना है कि आई एम इन द नेक्स्ट 1 minute वट एवर आई एम आंसरिंग, आई एम गोना थ्रो इन सर्टन कीवर्ड्स और मेक अ लिंकेज टू वट आई एम गुड एट, सो दैट दे ट्राई टू पिक अप एट लीस्ट. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग. बाकी यू कीप इट सिंपल ओनली. प्रिसीजन मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रिसीजन लीड्स टू शॉर्टर स्पीच. तो जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यू लुक वेरी गुड, okay, or you say you look dashing. There's a difference, right? It is very precise. Dashing is something that you would use for a male and for Yeah. sharp attire, okay? Or a woman would be complimented, they would not say you look very good today. They would say, madam, you look elegant in this saree. Okay, their speech is precise. तो आप जब एडिटोरियल्स पढ़ोगे ना, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, बहुत रिडक्शनिस्ट एग्जाम्पल है. दिस इज नॉट द लेवल दैट वी हैव टू बी, बट लाइक ऊपर आप पढ़ते जाओगे सुनोगे चीज़ों के. जैसे मैंने अपनी रेडिट पोस्ट में भी रिकमेंड किया था, वो पालकी शर्मा मैम का शो देखना शुरू करो. शी हैज़ लाइक द लेवल ऑफ कमांड ऑन इंग्लिश दैट शी हैज़, इट्स इमेंस, इट्स एक्सट्रीमली एडमिरेबल. You will learn so much from watching her. The delivery that she has, the tonality that she delivers, each and everything, and the punchlines that she, and so like a little bit of humor as well. तो वो लेवल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग यू विल बी एब्जॉर्बिंग सबकॉन्शियसली सुन सुन के. तो उसमें नोट करना कि कहाँ पे शी रिप्लेसेस एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स विथ अ सिंगल सेंटेंस. तो बहुत प्रिसाइज वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो. एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल गुड राइटर्स एंड स्पीकर्स, यू विल सी. तो सांसद टीवी वगैरह भी देखते जाओगे, इसलिए मैंने बोला है कि सुनो ज़्यादा और बातें ज़्यादा करो, उससे बहुत प्रैक्टिस होगी. क्योंकि अब बोलना, ये थ्योरी बनाना कि मैं बीच में ऐसा कुछ उनको हुक दूंगा, लिंकेज दूंगा, ऑल दैट इज़ मतलब हंकी डोरी, बट करने में बहुत मुश्किल होती है. यू हैव टू बी वेरी वेल अडेप्टेड स्पीकिंग दैट वे. Right. So following up on the hobbies question, जैसे like you said कि अगर recently भी कोई hobby शुरू किया है तो it's no issue to write in the DAF, but I'm assuming कि interview dates DAF submit करने के बाद ही आएंगी. तो it's a gambit, right? कि आपने लिख दिया और बहुत जल्दी आपका interview date आ गया and say, so how does that calculation work? Say if I like resume non-fiction reading, so should I like calculate कि भाई okay I'll read 4 books in the next 20 days or like 5 books? How does that work? That That's gambit? not a problem. You read just one book. मतलब किसने बोला है कि you have to, because they know how competent the exam is, right? They know what kind of effort it takes to reach the stage that you guys are in. So they will not expect you कि you would have continued with your hobby between from prelims till today. That's not what they're expecting at all. They would expect a general awareness about stuff. So for example, मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट देखी थी, किसी ने लिखा था कि लाइक प्लेइंग गिटार. नो, दे वर एट अ वेरी बेसिक लेवल. तो उनसे ये नहीं पूछा कि मतलब लेटेस्ट गाना कौन सा सीखा है, ये पूछा है. देयर इज़ अ फीमेल गिटारिस्ट हु इज़ वेरी वेल नोन, डू यू नो हर नेम? दिस वाज द क्वेश्चन. Okay. Or right, and there was a very popular music playing in the background in another transcript I'm telling about. There was popular music playing in the background. They must have had speaker and वो chill कर रहे होंगे panelists before the interview, and they ask him, can you recognize this music for me, can you recognize this tone for me, like that. So ये चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं. दिस इज़ अ वेरी जनरल अवेयरनेस वाली चीज़. तो रीडिंग था किसी के उसमें कि आई रीड नॉन फिक्शन बुक्स. तो उससे पूछा कि मैथ्यू वॉकर की एक बुक है वाई वी स्लीप, डू यू नो अबाउट इट? नहीं, ऐसे शुरू किया था, वाई वी स्लीप करके एक बुक है, डू यू नो हु द ऑथर इज, ये शुरू किया था, हैव यू रेड इट? उससे डिस्कशन शुरू हुआ था. तो अब जैसे आपने रीडिंग लिखा है तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट द टॉप सेलिंग बुक्स ऑफ दिस ईयर और द पास्ट फ्यू ईयर्स, इंडियन ऑथर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं. अगर नॉन फिक्शन है तो अगेन उसमें थोड़ा प्रिसाइज लिख दो. इफ़ यू रीड हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ भी हो सकता है, तो बी प्रिसाइज इन योर हॉबीज इज व्हाट आई वुड से. इसके अगेन वो कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है. इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए. जो भी है ना आपकी सिचुएशन वो है. मतलब आपने बोला मुझे नॉन फिक्शन हॉबी, आपने पढ़ी है ना, लाइक मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव रेड नॉन फिक्शन, राइट? दैट इज़ नॉट Yeah. ट्रू. आपने एग्जाम के कारण नहीं पढ़ पाई पिछले 8 महीने में, दैट्स ओके. अभी पढ़ लेना, एक बता देना उनको कि सर लेटेस्ट यही पढ़ी है अभी तक,
ठीक है, उससे ठीक पूछ। है। मतलब दिस इज समथिंग, मतलब देर इज नो यू नो गांधी इज वेरी ट्रू इन दिस, मतलब देर इज नो बीटिंग द ट्रूथ एक्चुअली। हम्म। अगर इफ़ यू हैव दैट वो कॉन्फिडेंस भी निकल के आएगा, और कुछ नहीं पता है तो नहीं पता है, बट विल टेल देम सच नाइस डिटेल्स कि वो बोलेंगे कि यार हाँ ठीक है, मैंने जो पूछा था वो नहीं पता था इसको, बट ये जो बता रहे हैं ना ये सही बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ के ही पता चल सकता है, वो बात हो जाती राइट। थैंक यू सर। है। यस नमिता। So you talked about that medical test. या So could you please elaborate like what should we do medically or for our bodies so Oh not yes, to miss on this this is test? a great conversation actually. Believe me, the so जिस दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है उस दिन आपको यूपीएससी में काउंटर से जाके एक स्लिप मिलती है। ओके, सो यू गेट लाइक अ 1 पेजर फॉर्म जहाँ पे वो लिखा रहता है कि आपका मेडिकल नेक्स्ट दिन इधर इधर पे होगा। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स उसमें रहते हैं, लाइक यू नो लोहिया, सफदरजंग, मेरा सफदरजंग में था। एंड बिलीव मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट फन डेज। द पीपल यू विल मीट, एक तो वो यूपीएससी से रहेंगे, सारे अकम्पलिश लोग रहेंगे, वेल रेड रहेंगे, सब अलग अलग डोमेन अलग अलग रीजन से आएंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑल्सो, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, तो यूल हैव अ लॉट ऑफ फन दैट डे। वन थिंग आई कैन रिकमेंड इज कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। जस्ट मेक श्योर कि यूजुअली मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है उस दिन। आपके आई का ज़रूर से चेकअप होगा। तो इफ़ यू वेयर ग्लासेस, मेक श्योर कि आप रीसेंट, मतलब कि आपका जिस दिन मेडिकल रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके 10 दिन पहले एक चेकअप करवाओ। विद इन दैट वीक ऑफ योर आई चेकअप, गेट दैट नंबर रिटन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है, एंड कीप इट विथ यू एंड कैरी। ये इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा रहता है, बट बहुत लोग इग्नोर करते हैं और उनके चक्कर में बाकियों को भुगतना पड़ता है। पूरे टीम को फिर से बुला दिया जाता है नेक्स्ट डे, because one lot does not get over. And those medical people are actually very egoist people, because now that is their day to show कि हम power दिखाएंगे अपना। ये सही बात है, because they don't have a life outside of those hospitals, right? तो वो administrative section में रहते हैं hospitals के, तो ऐसे वो बहुत अच्छा interesting काम नहीं करते हैं। तो उनको वो मौका मिल जाता है बोलने का कि ओ अच्छा इसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो जाओ लौट के कल आना फिर, तो इट बिकम्स अ हैजल फॉर एवरीवन। तो इफ़ यू हैव ग्लासेस, अपने इंटरव्यू के 7 दिन पहले जाना एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, गेट अ प्रिस्क्रिप्शन मेड एंड कीप दैट फाइल विथ यू। फर्स्ट थिंग्स, मेक श्योर यूर मेजरिंग योर ब्लड प्रेशर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा घर पे होगी आई थिंक सबके मशीन, तो वो सब मेजर कर लेना कि आपका बीपी नॉर्मलाइज तो नहीं हो रहा है, बहुत हाई तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे याद है 10 लोग थे अगर मेडिकल में, तो 2-3 लोग थे जिनका कंसिस्टेंटली 1.5 घंटे बैठाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, उनका बीपी वॉज लाइक हाइपरटेंसिव, and then they had to get 3 days later, 1 week later again, go to the same hospital, stay longer and then come back. तो अगर ऐसा कुछ है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ कंसर्निंग, बट वहाँ पे आपको क्यों ट्रबल लेनी पड़ी, राइट? इफ़ यू आर यू नो आपका बी एम आई इज़ इन द ओबीज कैटेगरी, मेक श्योर कि इट कम्स इन लाइक हेल्दी कैटेगरी टू स्टार्ट लूजिंग वेट, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू दैट कि 2 महीने बाद प्रोविजनल मतलब सिलेक्शन लेके फिर आप फिर से जा रहे हो मेडिकल करवाने। दे डू अ वेरी लाइक बहुत ही खतरनाक ब्लड चेकअप करते हैं वो। देर इज़ अ यूरिन टेस्ट ऑल्सो, देर इज़ अ चेस्ट एक्सरे ऑल्सो, देन देर इज़ ब्लड प्रेशर ऑल्सो, आई चेकअप एज वेल, एंड कुछ रैंडम छोटे मोटे लाइक यू नो फ्लैट फीट एंड हाइट मेजरिंग, वेट मेजरिंग, ये सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। नॉक नीज वगैरह भी चेक करते हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए नेसेसरी रहता है। बहुत सुपर अर्ली रिपोर्ट करना पड़ता है, तो यूल हैव टू वेक अप एट लाइक 4-6 AM अगर आपका हॉस्पिटल दूर है, एंड देन यू हैव टू बी देयर एट शार्प एकदम 8 साढ़े 8 जो भी टाइम रहता है। तो और कुछ खाना नहीं रहता है, भूखे रहना पड़ता है आपको वहाँ पे। तो जब सब हो जाएगा, यूजुअली सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बज जाते हैं, कई बार 4 बज जाते हैं, देन यू विल गेट टू ईट समथिंग इन द कैंटीन। But like I said, it's a very fun experience. You'll have the time of your life. You'll make some memories, meet really like-minded people, have great conversations. So yeah, it will be like the perfect end to your interview. Yeah, it will be very exciting, I'll tell you. Yes, Sadhya, I think you also have one question. Sir, I wanted to ask your opinion on multiple newspapers at this stage. Oh yes, again a frequently asked question. I think Indian Express, the Hindu तो पढ़ना ही चाहिए, उसके साथ selectively you can pick something. So for example, Life Mint और the Business Standard is great in the sense कि जो इकोनॉमी अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट है वो अच्छे देते हैं, बट वहाँ पे फिर वो IPO की भी न्यूज़ है और द स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की भी न्यूज़ है, तो डोंट ट्राई टू रीड टू लेंदी एडिटोरियल्स और समथिंग लाइक दैट, rather stick to governance and administrative issues of things.
सो पॉलिसी लेवल के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे लास्ट हाउ मेनी मंथ्स, आई वुड सजेस्ट कि पहले के न्यूज़पेपर्स तो मत ही उठाना। मतलब आज अगर छूट गया न्यूज़पेपर तो आज के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, जिस दिन का आया है तो पढ़ लो, ये पिछले जाने का तो कोई तुक नहीं है। रैदर वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली पिक अप विजन की मंथलीज एंड ऑल, या फिर जो डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट्स रहती हैं उनमें आप टॉपिक्स देखना शुरू कर दो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या। तो ये ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। फिर उस टॉपिक पे थोड़ी डीप डाइव कर लो, मतलब go to Google and search editorials if you can find. So literally like you type the topic XYZ A and D capital and then you type Indian Express within double quotes and then and फिर A and D and then you type editorial. So it will only show you Indian Express के editorials on that topic. So this is a way to do very specific Google search. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन यूटिलाइज। और अगर आपके पास वो LLMs वगैरह है तो हाँ, हिंदू डज कम विद अ क्वार्टरली पब्लिकेशन, दैट्स ऑल्सो अ गुड वे। वो बड़ी अच्छी सुंदर सी बुक रहती है, इट्स नीटली प्रेजेंटेड, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। तो ऐसा लिमिट करके पढ़ना, रैदर लाइक आई एम सेइंग वो वैंटेज का फर्स्ट पोस्ट जो वो है शो है सांसद टीवी डिबेट्स, शेखर गुप्ता का कट द क्लटर, ये बहुत अच्छे रिसोर्स है, सुनने से ज़्यादा याद रहेगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, आपको सुन सुन के सबकॉन्शियसली स्पीच इंप्रूव हो जाएगी। तो आई रिकमेंड दैट मोर। और येस लाइक 1% टाइप इन द चैट, देर इज़ अ रीसेंसी बायस फॉर श्योर। तो जो क्लोजर टू योर इंटरव्यू जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू पुराने थीम्स। और इसमें भी जैसे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट जब आएंगी ना तो एक बार अपने ऑप्शनल वाइज पढ़ना, ऑप्शनल की कीवर्ड सॉर्ट कर लेना कि जैसे मैं सॉर्ट करता था ट्राइबल क्या है, राइट, कास्ट के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी किसका है उस पे ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जेनेटिक्स एनेटिक्स पे सर्च कर लेता था। तो इस तरीके से यू डू वन ऑप्शनल बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट के पूरा रिसर्च। देन यू शुड ऑल्सो डू पैनल बेस्ड रिसर्च कि चेयरपर्सन कौन है। तो कई बार यू विल फाइंड आउट कि हर चेयरपर्सन का एक थीम है कि यार इसको ये IR पे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ये जो है ये आर्ट और बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ये जो है ये एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है इनके पैनल में। तो यू विल फाइंड आउट कि इनके पर्सनल क्या इंटरेस्ट है। देन यू कैन ऑल्सो दैट मैनिपुलेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू कैन हैव दैट सर्टेन एज की ओके मे बी इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दिस थीम I have the capacity to indulge them in it and open a conversation on that front. तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन डू, और वो भी लेवरेज ऐड कर देता है एंड दैट विल ऑल्सो बिकम अ पॉइंटर टू व्हाट करंट अफेयर्स टू रीड। कि अगर उनका वो फेवरेट एरिया और वहाँ पे कुछ आया है तो यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट इट इन अ लॉट मोर डिटेल। न्यू एक्ट्स एंड बिल्स, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यू शुड बी वेरी थॉरो। ये तो है। PRS की वेबसाइट एक टैब खोल के रखो, एटलीस्ट पिछले 5-6 महीने में जो मेजर बिल्स हैं और 1-1.5 साल के एकदम लैंडमार्क बिल्स हैं, डेटा प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें, और जैसे स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आया, स्पोर्ट्स की नई पॉलिसी आई है, देन यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बहुत वेल वर्स्ड होनी चाहिए। बाकी तो या आई थिंक एज आई गेट मोर आइडियाज़ अबाउट दिस आई विल शेयर इन द ग्रुप इटसेल्फ। आई एम यूनिवर्स, यस प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello, good evening, sir. गुड So इवनिंग। my question is about that while answering in interview, sometime I got the view that my answers a bit shallow. So the ओके question is how to increase depth in answer. For ओके। example, even if it's like any current affair or general issue or any optional question. So any question like how to increase depth in the answer and so that it looks more authentic and well-read person's answer. ओके, सो लाइक आई सेड देर आर 2-3 थिंग्स दैट यू कैन यूज़। जैसे मैं यूज़ करता था कि सर आई वॉज रीडिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट विच सेड, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, दिस ऑथर रोड दिस XYZ। देन आंसर टैंजिबली, जो मेंस वैल्यू एडिशन डेटा फैक्ट्स की हम बात करते हैं GS3 में और बाकी पेपर्स में, वो यहाँ पे भी काम करता है। तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स रियली बिकॉज दे बेस योर आर्ग्यूमेंट्स। आई कैन रिकॉल दैट नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, तो दे वर सेइंग कि इतनी सारी हमने चीज़ें कर ली है, वी हैव डन सो मेनी एफर्ट्स फॉर सो लॉन्ग, इतनी फोर्सेस बना दी है तो भी ख़त्म नहीं हो पाया है। तो आई सेड कि सर ख़त्म नहीं हो पाया है, बट द डेटा क्लियरली शोज़ कि देयर हैज़ बीन अ वेरी कंसिस्टेंट रिडक्शन
In fact, in the year that we're talking right now, we have had the least amount of Naxalite attacks so far. And I quoted the exact number. He said 22 बस हुए हैं last year, as opposed to 143 that was 5 years back. And there has been a very consistent downtrend. So ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है. In the future we have optimism, and then you let your answer flow. और फिर जो भी आप बात करते हो बहुत tangibly करते हो, citing current affairs or citing the laws that have been passed, the policies that are existing, or examples that you have. इसीलिए ना मैंने अपने रेडिट पोस्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है. इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर यू गाइस. इफ़ यू कैन फाइंड ऑफिशियल्स टू टॉक टू, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. These people have served longer than we can imagine. In those people, they have lived and breathed that reality. So there is no beat for that thing. जैसे मैं बता रहा हूँ, I spent some time with this IPS officer who had served in the Dantewada region, in the Bastar region. He has seen Naxal violence in front of his eyes. So he told me कि अच्छा डू यू नो कि ये लोग कैसे इतना सर्वाइव कर जाते हैं. वो हम पढ़ना एक बात होती है राइट, कि नेक्सस है और मतलब कि ये इधर से सप्लाई हो रही है उधर से सप्लाई हो रही है. ही टोल्ड मी कि इमेजिन देयर सिचुएशन. इन लोगों की भाषा अलग है, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. वहाँ पे पहुँचने के लिए बोट्स लेनी पड़ती है. अ कार कैन नॉट गो देयर. ओके, even if there has to be a voting in that region, a helicopter flies and 2-3 officials wearing Kevlar jackets drop down from the helicopter to get the voting done for just a small village of let's say 20-30 people. This is the area that we're talking about, जहाँ से नक्सल वायलेंस इमर्ज होता है. They don't know how to speak, they have no education, their healthcare and socio-economic indicators are all gone. Okay, what these Naxalites do is they have one priority in life: survival. That happens through very primitive agriculture, like झूम कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन दैट वी कॉल इट. ओके, तो उनके लिए बाकी लाइक हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, जीआई टैग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बहुत दूर की बात है उनके लिए. what these Naxalites do is they teach them a very basic form of agriculture. सीड ऐसे उगाया जाता है, उस पर मैन्योर डाला जाता है, उसको ऐसे काट के हार्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड. दिस इज व्हाट दे टीच देम, and this is so life changing for them कि they feel indebted to the Naxalites to do something for them. This is how the brainwash starts. तो they literally provide them with nothing, money वगैरह बहुत दूर की बात है. They provide them with seed and manure is what he told me, and that is enough for them to get brainwashed. This is how it starts. Then once they do like 2-3 crops of normal cropping for you, you give them poppy seeds. Then you have opium in your hands. It becomes a going from teaching them agriculture to literally having a narco terrorism nexus. It's not a big deal for them. ऐसा होता है. तो when they उनके पास और कोई social, because they have nothing to compare it to. That is very tangible progress in their eyes, this tribal population. And then they attack somewhere and they would have a police camp जहाँ से वो हथियार उठा लेते हैं. That is how their arsenal of weapon grows. So अब ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ रीजन में that there are NGOs like Ramakrishna Mission are doing great work. They are urging the villages that have been brainwashed by Naxalites to surrender and all of those things. So Chhattisgarh had rolled out a surrender policy which became very successful because the rehabilitated villages के villages वहाँ से like मुझे पता चल रहा है कि उस गांव से कुछ students जो हैं tribal students, they have gone foreign to study. That is how the surrender policy has worked out. So there is a lot of optimism around these things कि in the coming years we would have बहुत अच्छे perspective. अब ये सारी बातें मुझे कौन से न्यूज़पेपर में मिलेगी, कौन सी बुक में मिलेगी? नहीं मिलेगी. एंड दीज आर द रीजंस आई साइटेड कि सर आई वाज टॉकिंग टू एन IPS ऑफिसर हु वाज सर्विंग इन दिस रीजन एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी. Imagine somebody comes and says कि सर समाधान डॉक्ट्रिन and MHA रिपोर्ट के अनुसार and all of these things we have this global ranking, and I comment कि सर this is what the conversations reveal कि this is how things look on ground reality. Who do you think is gonna get more marks? It's very basic. तो ये if you can implement in some way or the other, I will do my best to bring on as many selected people or accomplished people to this domain and let you have conversations. But आपके circles में भी if you can find believe me, आपके जो DM वगैरह हैं और आसपास officials हैं, आप जो भी गवर्नमेंट सर्विस में होगा उनको कॉल लगवाओ और पूछो कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे बस बात करने मिल सकता है क्या, 15 मिनट 20 मिनट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई UPSC पैनल से रिलेटेड भी मिल जाए. Okay, thank you so much, sir. But for like current affair questions and all,
तो उनमें कैसे यूज करेंगे? लाइक ये तो सोशल इश्यूज का थोड़ा हो गया, बट जैसे अब फॉर एग्जांपल G2 चल रहा है, चाइना इन यूएसए, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो गया, जो भी ट्रम्प रिलेटेड कुछ भी जो भी करंट में चल रहा है, वॉर्स एंड ऑल, तो इनमें सर कैसे थोड़ा डेप्थ में आंसर कर सकते हैं? राइट, राइट, मतलब तो इस इशू में भी यू वुड हैव अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? मतलब सी, अब ऐसा मत सोचो कि आपको सारा चीज़ खिचड़ी पका के मिल जाएगी एक आर्टिकल के अंदर। इफ़ यू नो कि ये चीज़ें चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महीनों से एक्चुअली थीम वाइज चल रहा है, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि यू डू सम रिसर्च कि इस ये सब होने से पहले हमारा ट्रेड कैसा था, ये सब होने के बाद कैसा है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हाउ हैव द ऑयल प्राइजेस सफर्ड, हाउ हैज़ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बीन अफेक्टेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट यू कैन टॉक टेंजिबली कि सर ये जब आया तो उसे ऐसा इफेक्ट पड़ा, वैसा इफेक्ट पड़ा, एंड देन ये थिंकर है, ORF का ये पेपर है जो इसने लिखा था, दे हैव दिस ओपिनियन अबाउट दिस। तो ऐसे ऑब्जेक्टिविटी यू कैन ब्रिंग। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में नहीं आ सकती है। ओके। एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि इसके रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल जो भी करंट एंड ऑल में चल रहा है, सर चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं बेटर वे में? Yes, about this, I would recommend don't use ChatGPT because ChatGPT fabricates a lot of stuff. बहुत बार use Perplexity or Grok, and also use the deep research feature इन चीज़ों का। तो I don't know if you guys know this, but Airtel के जिसके पास सिम है, या एयरटेल की जिसके पास सिम है, उसको परप्लेक्सिटी प्रो बहुत फ्री में मिल रहा है, एंड परप्लेक्सिटी के थ्रू यू कैन एक्सेस ऑल द LLMs, ग्रॉक, क्लॉड, GPT प्रो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अगर आपके पास एयरटेल की सिम है, गो टू द एयरटेल थैंक्स ऐप, यू विल यस फाइंड सर, दैट परप्लेक्सिटी प्रो सो इज आई हैव एयरटेल, यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसमें डीप रिसर्च वाला फीचर होता है। तो कोई भी टॉपिक पे ना उसको डीप रिसर्च करने बोलो, तो वो आपको एक्चुअल वो लिंक्स देगा कि उसने कहाँ से सोर्स किया है ये मटेरियल। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द आंसर्स, उसको पढ़ लो, ठीक है, एज अ समरी, बट ऑल्सो ओपन दो टैब्स एंड रीड द एक्चुअल रिपोर्ट्स एज वेल, जो न्यूज़पेपर्स की है या जो स्पेसिफिक ट्वीट्स वगैरह हैं, तो उनको पढ़ो, वो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सर। यस नमिता। Sir, I wanted to ask that how or not, like social media like Twitter, Instagram, which we kind of scroll, can be used, because I know that there are many news, localized news that we come like we come to know through Instagram reels or anything. So can that be helpful, or like is it harmful? So should we like It's stop a that? very slippery slope, I feel. If I were to answer it objectively, I would say it would end up hurting you because the algorithm knows what you want and it feeds you the most enjoyable, the most entertaining stuff. So most likely, let's say, even if you try to go watch some, take your information through reels and all, I don't recommend that. Rather, be in touch with what is going on in the nation in general. Let's say there is an important debate, for example, so India's got latent wali controversy with some Iran and all of those things. So that poses a very big question in India about freedom of speech and what are the limitations of our reasonable restrictions. So that becomes a national matter. Something like that floats up from social media, emerges from there, and then has a bearing on the larger conversation that goes on in our country. Then you have to read it and be in touch with that. But otherwise, I don't think कि social media पे रह के you can gain that much. Still, I would say कि एक different Twitter account बनाओ जिसमें you just follow government officials and ministries के pages, एंड उसको बस थोड़ा सा एक टैब खोल के आधा घंटा देख लिया करो कि लेटेस्ट क्या पोस्ट हो रहा है वहाँ पे। कोई स्कीम का एडवर्टीजमेंट है या फिर किसी ने कुछ नए इवेंट करवाया है, दैट बिकॉज अ टॉकिंग पॉइंट कि समबडी ट्रैवल्ड, लेट्स से कि ये कॉफ़ी बोर्ड वगैरह है, राइट? मतलब यू फॉलो जैसे रैंडम DPIIT का इंस्टाग्राम हैंडल, एंड दिस एक लिए कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कॉफ़ी बोर्ड के CEO ये हैं, ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है हमारे इंडिया में, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपोर्ट टाइप। अब मेरे डैफ में कॉफ़ी लिखा हुआ है, आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई एम लाइक अ थर्ड वेव कॉफ़ी कनोजर, यू कैन से, कि आई नो हाउ टू मेक इट एंड ऑल। क्वेश्चन आ सकता है, मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा विच यू कैन यूज एज वैल्यू एडिशन और कैन बी अ वेरी नाइस टॉकिंग पॉइंट फॉर यू इन जनरल इन एनी कन्वर्सेशन। तो वो आई थिंक सस्टेनेबल मेथड रहेगा रैदर देन गोइंग द ट्रेडिशनल सोशल मीडिया वे। Okay, thank you, sir. आई थिंक यस राहुल। So when can I expect the interview schedule?
or interview when will be starting? won't take much time. I think 14 days 2 weeks के आसपास plus minus 5 Uh, कर लो. Approx which date it will be starting? यार एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना तो बिकॉज अभी साइकिल भी चेंज कर रहे हैं ये लोग एक्सलेट. बस वही है ना कि मतलब जैसे डैफ 2 की फिलिंग कंप्लीट होगी और विद इन 1 or 2 weeks आ जाएगा. तो मान के Okay, sir. चलो. आई थिंक इंटरव्यूज वुड स्टार्ट, अगर बहुत ही इन लोग गड़बड़ी करेंगे तो दिसंबर फर्स्ट वीक, और नहीं, दिसंबर फर्स्ट वीक इज़ टू अर्ली एक्चुअली. सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर वुड बी अप्रोप्रिएट. यस सोनाली. गुड इवनिंग सर. सर मुझे ये पूछना था कि लाइक हाउ कैन वी प्लान द डे फॉर लाइक अगर हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है. राइट. सो Uh, फर्स्ट थिंग वुड yes. बी कि लाइक न्यूज़पेपर उठा लो, वहाँ से ही शुरू करो. और जो जैसे एक तो आपका प्राइमरी न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस है, वो कवर टू कवर पढ़ लो. दिस टाइम यू शुड ऑल्सो बी रीडिंग अ लिटिल बिट ऑफ न्यूज़ दैट यू यूज्ड टू स्किप ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, की सिलेबस वाइज है. तो थोड़ा इन जनरल नर्व ऑफ द नेशन पे ख्याल रखना. देन सेकेंड न्यूज़पेपर या थर्ड न्यूज़पेपर जो भी आपका है, दैट इज़ योर डेज रीडिंग. तो फर्स्ट मेक एन एजेंडा कि इस न्यूज़पेपर से पहले क्लिम्स कर लो कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ये चीज़ें स्किप करनी है, उनको निकाल के रख लो. देन यू स्टार्ट रीडिंग दैट. देन योर डे शुड हैव 2-3 पार्ट्स इन जनरल. एक तो आपकी डैफ बेस्ड प्रिपरेशन रहेगी, उसको आपको करना है, और एक ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड प्रिपरेशन रहेगी. तो इन दोनों को इक्वली चलना है. जैसे डैफ वाली आई फील कि 1 हफ्ते 2 दिन में यू वुड हैव collected great content. The only thing would be left is to keep on revising that content, or maybe find 2-3 new dimensions if possible. उससे ज़्यादा नहीं. फिर आपकी ये जो ट्रांसक्रिप्ट वाली प्रेप है, दैट बिकम्स ओवरवेलमिंग. तो आई थिंक क्लोजर टू योर ओन इंटरव्यू यू वुड बी स्पेंडिंग अराउंड 70% ऑफ योर टाइम banging your head against the transcripts that keep on coming in the group. So that starts taking up a lot more of your time. तो ये sequence follow करो. I think it's a very fine balance of everything. Okay, sir. And sir, like regarding the transcript, so what we have to do, like we have to read it and answer, or like in what way? That's a great question. तो आपको ट्रांसक्रिप्ट में बहुत अलग अलग तरीके के मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे कंटेक्स्ट में फिट ही नहीं हो रहा है, ये टोटली किसी और के डैफ बेस पे है और इससे मेरा कोई ओवरलैप नहीं है, बेस्ट स्किप दैट क्वेश्चन. If it's on a theme, okay, that has been in news for some time or that is currently going on in the news, तो look it up. अगर आपको नहीं पता है तो make sure you look it up. Be well researched. For example, environment और energy related themes आते हैं, तो आप पढ़ लो उसके बारे में, opinions बना लो. तो क्या होगा कि usually every topic has a debate at its core and facts at its core. इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना. तो फॉर एवरी टॉपिक यू शुड हैव नोन द डिबेट्स दैट आर देयर. तो फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट की इन जनरल बात करो, राइट. तो इन्वायरमेंट में एक डिबेट आती है डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. दैट इज़ वन ऑफ द डिबेट्स. उसके ऊपर एथिक्स की केस स्टडीज़ भी आती हैं. अनदर वुड बी कि लाइक इंडिया के लिए जो कार्बन टैक्स है वो कितना फेयर है, जो EU का CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये क्या लाइक नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ रहा है, हाउ आर इज आर इकोनॉमी गेटिंग अफेक्टेड, ऑल ऑफ ये एक डिबेट हो सकती है. another debate that might be the global north and global south की जो debate है कि जो transition करने बोल रहे हैं, CBDR के principles हैं, polluters pay principle है, ये सारे implement हो पा रहे हैं कि नहीं. then out of the Paris agreement, like these developed nations have dropped out recently. So these are the debates. Now what are the facts? The facts are कि फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे इंडिया में, व्हाट आर द ट्रेंड्स विद रिलेवेंट टू फॉरेस्ट कवर, कितना बढ़ा है कितना घटा है, ISFR क्या बोल रही है अभी फॉरेस्ट कवर के बारे में, एयर पोल्यूशन के लेवल्स कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ पे, ये सारे फैक्ट्स हैं. तो डिबेट विल बी अ क्वेश्चन, हाउ यू आंसर देम यू विल बेस देम ऑन फैक्ट्स. तो इस तरीके से आप ये डिविजन करके पढ़ो. ओके, यस, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. हेलो सोनाली, you have raised a hand. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, I think nobody has any more questions right now. So I just hope this session was okay. Yeah, Dilip, please go on. Sir, I've typed in a couple of questions. Okay, let me just see. As someone who also has phases of pursuing various interests, how did you narrow down hobbies, sir? Yes, this is great because I'm ADHD, so I have multiple interests. So what I did was कि
things that I've pursued for the longest time, and again, which for at least, let's say, at least 6 months to last year that I've been consistent with. So those that came up are the ones. तो आई वुड से कि थीम्स रहते हैं सबकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप बचपन से आपने इंटरेस्ट नहीं छोड़ा है, तो उनको फेवर करो, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा उन फ्रेंड्स में. Based on the perceptions made about specific board members with respect to inclinations and issues, of course, should we want to play to it vis-a-vis answering questions? Yes, you should. For example, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का जो ट्विटर प्रोफाइल है उसको प्लीज़ पढ़ते रहना. वो जिस चीज़ के बारे में ट्वीट करते हैं उस दिन वो उसके ऊपर आके बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. तो उनके जो पब्लिकेशंस हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनने क्या ट्वीट किया है रिसेंट टाइम्स में, अगर उनने कुछ editorials लिखे हैं in the past, तो make sure you look them up. That could be really helpful if you align a little bit to their orientation. Sir, what in a day we can do? Okay, this is answer. Anthro specific, please share a list of themes. Okay, this I'll do personally, I think. Recency, most of it is covered. All right, it's been nice talking to you. Like the group is always open for discussions. Please don't hesitate in sharing material or anything like that. Keep it a very open space. Everybody will benefit from you asking questions or you sharing whatever that you want to share. Baki rest, for any help, any kind of guidance, I'm there. And like I said, I'll be working on front foot to help you all bring more people for discussions and all of those things. So I'll ask, like, Priyanka is already an IRS and we have another IRS who knows. और अच्छे स्कोर्स आए उनके इंटरव्यू में. प्रियंका के तो 206 थे, तो उसके भी इनपुट्स हम ले लेंगे क्लोजर टू द इंटरव्यू. Also, one thing, some people were requesting me about one-to-one sessions and DAF analysis and all of those things. So I'll have to figure that one thing out, because there are like hundreds of people in the group, you must have seen. So I hope कि I'm being very transparent about this, कि if there might be like a paywall for it, I'll try to keep it as low as possible. Obviously I've been on the other end, तो वो होगा just to sort of create a filter कि who all are serious, and then proportionately will give it time. So obviously it won't be an expensive course or something like that. I'm not like affiliated to any coaching, but still just to streamline everything and make it more like sort of easy to tackle for me, I might have to do it. But apart from that, like I said, my DMs are always open. Please do not hesitate to ask any questions or any kind of help related to the interview. I'll explain to you the same things that I've said today hundreds of times if it has to be done. So yes, I'm really proud of everybody's performance in the mains. This is the time to shine, is all I can say. Good night. Nice talking to you, everyone. Thank you, sir.